Hi, welcome to the Mohua show. My name is Mohua Chinnappa and I am an author, entrepreneur and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in this episode, we have the privilege of introducing a true agent of change, Advocate Neyha Chaudhary, a dedicated legal professional, a fervent social activist, and I'm completely impressed with her. She has been unwavering in her commitment to championing the rights of women and children. Neha की practice है गुरुग्राम में under the esteemed Punjab and Haryana Bar Council. Advocate Chaudhary has been a driving force in spreading awareness about legal rights through numerous successful legal awareness programs, both online and offline. And that really got me interested because there are many women in India who do not know what the legal rights are and how is it that they can go out there. सब लोगों को ज़्यादातर डर लगा रहता है, about going out there and getting any sort of legal help. And Chaudhary has also been recognized for her incredible contributions. She has been awarded by the Karnataka Book of Records. So join us today as we delve into an inspiring journey of making a profound impact on society through her tireless efforts and a more just and equitable world. Welcome Neha in today's podcast. So सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है आपसे पूछने की, आपका जो ये ड्राइविंग फोर्स और जो कमिटमेंट है फॉर एडवोकेटिंग फॉर विमेन एंड चिल्ड्रंस राइट, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई एंड व्हाट वाज दैट पॉइंट दैट मेड यू वांट टू टेक दिस अप? Well, first of all, thank you so much because this is my really favorite part of job. I love spreading legal awareness, and the trigger point started, when at my own places I will question what is my contribution in this house, and it really affected me mentally, emotionally a lot, because a woman, if she is not earning, doesn't mean that she is not taking care of the house. She's doing 24/7 into 365 days job without any salary, no perks, nothing. So because I was an advocate, I was a practicing advocate, and understanding that if it can go with me, if this can happen to me, it must be happening to so many women who are not even aware of their legal rights and don't know how to pursue, the legal battle. And hence I, started with this campaign of webinars, especially, offline, online platform, because I also realized that many women are not able to step out from their houses and learn about their legal rights. I really wanted to spread maximum knowledge and maximum awareness about what are their legal rights at home and otherwise also. तो आपकी इतनी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इन कंडक्टिंग लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सो व्हाट आर द की इश्यूज दैट यू फील वुमेन एंड चिल्ड्रन फेस concerning their legal rights? मतलब उनको पता भी होता है या नहीं पता होता है? आपके एक्सपीरियंस में what are the things that come out the most? महुआ, पता होने के साथ साथ सबसे बड़ा जो इशू आता है वो होता है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. वो I don't believe in women empowerment anymore. I believe that there shall be a drive of economic empowerment. Women are not able to fight their legal battles only because वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, एंड मे बी उनके फादर बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, उनके हस्बैंड्स बहुत अच्छी बड़ी MNC में जॉब कर रहे होंगे, ब्रदर भी बहुत कुछ कर रहे होंगे, बट जब तक औरत अपना पैसा नहीं कमाएगी तब तक वो आगे अपनी लीगल बैटल को लड़ ही नहीं सकती है. बिकॉज फैमिली प्रेशर भी आ जाता है, क्या करना है, लिटिगेशन में जाके कोर्ट के धक्के खाओगे. बट each and every day woman is fighting mentally, financially, and there's so many things women go through. मैं domestic violence की अगर मैं बात करूँ, जो women are facing, this is the highest violence happening with the women. This is the most prevalent form of abuse, domestic violence, which you call, and occurs within the confines of homes. एंड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके मैं इसको बताऊंगी कि इमोशनली लाइक हस्बैंड साथ में रह रहे हैं, लेकिन शी इज एजुकेटेड, वो जॉब करना चाहती है, उसको जॉब नहीं देने जा रहे हैं. तो
रिस्ट्रिक्टिंग नहीं, तुम घर का काम करो, यू कैन ओनली डू योर थिंग्स, आप इसी के लिए बने हो। 1 साल जॉब की, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बोल दिया नहीं, नाउ यूर मदर, इट इज योर ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड महुआ, एक और चीज मैंने देखा है कि भी डे टू डे हम देखते हैं कि अगर घर में, इवन इफ अ वर्किंग वुमेन, घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, सास बीमार हो जाए, कोई भी बीमार हो जाए, हर किसी की नजर औरत पे चली जाती है, वो बहू पे चली जाएगी, माँ पे चली जाएगी, ये छुट्टी लेगी। नोबडी क्वेश्चन कि हस्बैंड को भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है कभी। Am I right, Mohua? एब्सोल्युटली राइट। ये तो मेरी दिल की बातें आप कर रहे हो, बिकॉज मैं खुद होम मेकर हाउसवाइफ रही हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। बिल्कुल, मतलब मेरे पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं उनको भी दे वर नॉट हैप्पी अबाउट मी रीबूटिंग माई करियर, बिकॉज सबके लिए लग रहा था कि मैं अपने आप के साथ मगन हो जाऊंगी तो मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी। तो वो जो सेल्फिशनेस है वो पूरे फैमिली तक परमिएट करता है, पर बहुत सारी औरतें हैं जिनके पास हिम्मत नहीं होती ये सब बातें करने की, और अभी तो इंडिया में मेरे ख्याल से हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज़ में हम फिजिकल अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं, इमोशनल अब्यूज़ की तो अभी तक बात मतलब हम लोगों ने छेड़ा ही नहीं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो लोग, हम लोग कैसे गैसलाइटेड हैं एक सिचुएशन में। तो हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, बिल्कुल हूँ। सो नेहा, ये जो आपका फोकस ऑफ प्रैक्टिस इज ऑन एजुकेटिंग पीपल अबाउट हीनियस ऑफेंसेस जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट अंडर एक्ट सच एज पॉस्को, डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर क्राइम। बहुत सारी ज़्यादातर लड़कियां एक्चुअली आर विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम। और मैंने जब मतलब मैं लिख रही थी स्पेशली ईरान के ऊपर, बहुत सारे आदमी लोग आके कहते तुम गंजे हो जाओ, अपने बाल काट लो, व्हेन आई हैड रिटन अबाउट इट। और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मैं सहम जाती हूँ ऐसी चीज़ें जब आता है। फिर उसके बाद जो मेरे अंदर वो आग है, मैं रुकती नहीं हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हाउ हैज इट बीन फॉर क्रिएटिंग एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन? आई मीन, हैज इट हेल्प टू रेज अवेयरनेस? और जो इनसिक्योरिटी फेस करते हैं औरतें और बच्चे, बोथ घर पे और दूसरे सेटिंग्स पे, हैज योर वर्क बीन एबल टू एड्रेस दीज थिंग्स ऑल्सो? Yes, a lot. Because if we figure out not only women, many men are being helped with this when I conducted cybercrime webinars, because आजकल फिशिंग बहुत हो रहा है, आजकल पैसा बहुत ज़्यादा, when you see कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई गई। एंड रिसेंटली आई शेयर्ड वीडियो कि आपके आर यू अ शेरेंट और अ पेरेंट? इफ यू आर शेयरिंग ईच एंड एवरी स्टोरी ऑफ योर चाइल्ड, आप कहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं, कहाँ चेक इन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्पेशली फॉर मदर्स आई वांट टू गिव दिस मैसेज। इफ यू आर गिविंग एवरी रिपोर्ट ऑफ ए चाइल्ड ऑनलाइन, it is a high risk in coming future. So I always make sure कि mothers, ठीक है, they have access to internet, and I believe that internet is a blessing as well as a curse. Do not be a servant, you can't depend on internet all the time. There has to be limited screen time. Make sure that your profile is not public. Make sure you're not adding unknown person in your profile. You're not chatting with unknown person and sharing your personal life. और आजकल अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगी, अगर वुमेन इज इमोशनली ड्रेन्ड फ्रॉम हर फैमिली, शी विल फाइंड आउट एनोनिमस पर्सन जिसके साथ वो अपनी दिल की पूरी बात खोल के रख देती है, बात कर लेती है। आप पाकिस्तान और उसका देख ही रहे हो, सीमा हैदर एंड दैट केस, वो दिल खोल के बात कर लेती है बिकॉज घर पे कोई बात नहीं सुन रहा है उसकी, एंड उसके जो रिपरकशन निकल के आते हैं, दे आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अ पर्सन कैन मिस यूज दोज इंफॉर्मेशन बिकॉज ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं खासतौर पे एनोनिमस इन नेचर होते हैं। पीपल डू नॉट नो कि किसने किया है, आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढने में ही बहुत टाइम लगता है, एंड इसके लिए साइबर सेल ही डेडिकेटेड है फॉर these kind of offenses. So if anyone is listening to me, I just want to make clear that any information that you're sharing on internet shall not be like personal life name. और मैं वो एक केस के साथ में आपको इसको रिलेट करके बताऊंगी। इसमें क्या हुआ था कि पेरेंट्स के बड़े एक्साइटेड होते हैं, बच्चा हुआ,
1 month old, 2 month old, हम यहाँ गए बच्चे के साथ, बच्चे का ये हुआ वो हुआ. They share everything on internet. And there are stalkers also. People are watching you, what are you doing on internet. So one fine day they checked in that we are in Sarojini Nagar market, which is like very crowded market. आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है वहां पे. वो जब वो गए एंड बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था, एंड चलते चलते वो भीड़ में बच्चे का हाथ खींच के दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ा दिया गया था. And then that child was used for immoral trafficking, and these cases, really, gave me goosebumps. So I make sure that women or parents need to be very careful in sharing what they are sharing. If don't be servant, don't be dependent on me. Rather than make internet your servant, आप उसको कैसे सोशल मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड टू द वुमेन हु आर नॉट एबल टू वर्क, दे कैन यूज इंटरनेट टू वर्क. आजकल बहुत सारे ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम. सो मैं वही कहती हूँ कि इंटरनेट इज़ अ ब्लेसिंग एज वेल एज इट्स अ कर्स. तो नेहा, आपका जो कोर्स ऑफ एडवोकेसी है, व्हाट हैज बीन सम ऑफ द मोस्ट हार्टनिंग मोमेंट्स और सक्सेस स्टोरीज that reaffirm your belief in the importance of fighting for women and children's rights? See, the best part is that when I see women coming out from a toxic marriage, because it's not only that एक limit होती है, आप एक emotional abuse भी आप tolerate कर सकते हो. एक limit, एक saturation point होता है जिसके बाद आप सहन नहीं कर सकते. लेकिन something like physical abuse is मेरे सोच के दूर है ये कि गर्ल हु लेफ्ट हर हाउस डाउरी भी लेके आती है. हमें पता है डाउरी इज इलीगल, बट इट इज स्टिल continuing in some part of the country. So then comes sexual violence. जब हम for example I talk about posh in rural part of areas of the country, इस area में women are more working, अगर हम ratio check करें, than urban areas. And it is because there are 2-3 reasons कि जो women हैं in the urban urban areas, either they are not able to come out because now she is a mother, she cannot come out, and she is being told by the family, now you have to take care of the house. Number 2, the offenses like sexual harassment. हम बहुत सुनते हैं कि भी for promotional benefits, ये होता है कि आपको अपने बॉस के साथ compromise करना पड़ेगा. एंड ये जो अफवाहें हैं जिसकी वजह से women are not able to come up, they're not able to work, ये भी एक रीजन है कि अर्बन एरियाज में काम नहीं कर पा. माई फेवरेट पार्ट इज व्हेन अ वुमेन इज एबल टू अचीव हर freedom I would rather say, and dignity and safety. That really makes my profession more happy go profession, and it satisfies me when I see. It's not that I am feminist. I'm not feminist, I would say. I believe in equal rights. If a man working for same profile is getting, for example, 1,000 rupees, a woman should also get 1,000 rupees. And if both are performing equal, they should be promoted equally. And same at, domestic places. If woman is coming from work, she should also be asked a glass of water. If a man is asked, वो भी उतना ही थक के आती है. Rather than it has been scientifically proved that women, work more physically than men. So नेहा, ये जो इतनी सारी skewed चीज़ें हैं और मुझे पता है कि इसके लिए बहुत वक्त लगेगा before changes really happen, because it is so deeply ingrained in us, to patriarchy is so deeply ingrained in us that we don't know how to move away from this. तो जो लास्ट सवाल है मेरा आपसे नेहा कि आप क्या एडवाइस दोगे जो इंडिविजुअल्स आपके जैसे ही पैशनेट है अबाउट मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर कम्युनिटीज एंड एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स,
बट उनके पास लीगल बैकग्राउंड नहीं है और वो किस तरीके से कुछ कॉजेज ले, तो क्या क्या चीज़ें फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए और कैसे इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए? See, when a woman who comes to me and tell me that I am not financially fit, I always tell there are other ways also. पहली बात तो, when she has started a battle, whosoever has started a battle shall be headstrong. उसके बाद पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है? बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आपके अगेंस्ट भी आपके करेक्टर के अगेंस्ट भी बोला जा सकता. So be headstrong. Number 2 is that there is a provision of legal aid service. Every district has it. You can definitely ask for the free legal aid services from the government. It's free of cost. Telling that I am not financially fit, she can definitely go for a legal aid service. And there are Nirbhaya funds. There are so many protection like POCSO. If we talk about protection of children from sexual offences under 18, उसमें भी बहुत सारे provisions हैं. And ये तो zero tolerant act है, POSH है. More than that, a woman need to understand what relief she is looking for. Either it is for domestic, either it is for workplace, either it is for sexual offences, either it is for dowry, what or cyber crimes, and need to learn about that act thoroughly. Even if you have an advocate, learn the act thoroughly by yourself also. Educate yourself also. And if there are women helpline also. एक छोटा सा स्टेप में महुआ उन सारी औरतों के लिए बताना चाहती हूँ, which will really help many of the women who are listening to it. Whenever you have any physical abuse, sexual abuse, or cyber abuse, any kind of abuse, number one thing you have to do is that go to the police station and lodge an FIR. It is very important. And if there is any sexual or physical abuse, जो आपको करना है वो आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना पूरा टेस्ट करवाना है, पूरा अपने आप को थॉरली टेस्ट करवाना है. That report is valid in the court. And the other thing is that FIR करने से डरिए मत, because there is one पहले आपकी written complaint होगी, investigation होगी, and then comes the FIR. And if your allegation on someone are true, then you don't need to, and डरने की कोई बात नहीं है. अगर आपके साथ सच में कुछ ऐसा गलत हो रहा है, on the prima facie अगर नजर आ रहा है, why to be scared? Dowry के cases आ जाते हैं, sexual offense and acid attack which we are missing. So I think ये सबसे offense होगा. अभी पीछे हमने कुछ देखे होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अंदर आए हैं, इन हुए हैं, जिसकी वजह से ऑफेंसेस ने एक नया रूप लिया है. बॉडी कट करके दे पुटिंग इन फ्रिजेस, बेड के अंदर. सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल ऑफेंस विच वी कैन नॉट थिंक ऑफ. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज. हमें लगता है कि चाइल्ड मैरिज खत्म हो गया है, लेकिन इट इज़ नॉट खत्म नहीं हुआ है. And honor killings, forced prostitution, moral trafficking. So these things, अगर आप educated हैं, if you have that legal awareness, even if you do not have you're not economically empowered, doesn't mean that you cannot fight your legal battle. You can definitely go to legal aid. You can apply for legal aid. It will definitely help you. Thank you so much, Neyha, for being on today's podcast. और बहुत सारे हमारे listeners हैं जो जानना चाहेंगे कि how is it that they can go about if they are facing any sort of a crisis in their personal lives? What is it that they need to do? So this podcast will really help them understand that it is a daunting task, but it is not something that can't be done. So thank you, Neyha, once again for appearing on today's podcast. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mohua Show, where we talk ईमानदारी से.